What's up, you guys? Welcome or welcome back to my YouTube channel. So, in today's video, I am doing another haul. So, this is another makeup skincare haul. So, yeah, we are going to talk about a lot of them. So, जल्दी से start करते हैं ये video. आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो hi, this is Anshu. I love makeup, skincare, fashion और उसी के नाम ये channel है and I talk about mostly very affordable makeup. So, yeah. If you are interested in such uh, videos, do consider subscribing, like, share, subscribe, and let's get into the video. Okay, not sure about the hairstyle. I'm not a hairstyle person, you guys. I say it all the time. Like this is a thoda better, na? I don't know. So जल्दी से start करते हैं. I have a lot of stuff. So yeah, I went crazy bananas because बहुत सारे discounts थे तो मैंने बहुत सारी shopping की. And let's talk about Mama Earth. So Mama Earth पे बोगो था और I will say you guys Mama Earth ना उनकी खुद की वेबसाइट पे बहुत डिस्काउंटेड रेट में मिलता है तो I will recommend go to Mama Earth website and buy this or yeah let's talk about them. So this is a hair like this is shampoo प्लस कंडीशनर और ये कॉम्बो मैंने लिया है क्योंकि बोगो था ये कॉम्बो के साथ आई हैव फाइनली बॉट द सीसी क्रीम. मैं कब से ये सीसी क्रीम लेना चाही थी. इफ यू गाइस नो मी मुझे लाइट मेकअप बहुत पसंद है तो मैं इसलिए वो सीसी क्रीम लेना चाह रही थी तो फाइनली मुझे लेने मिल गया. सो क्योंकि ये था इनका प्राइस मैं बताती हूँ एंड दिस इज 349 सो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है ये एंड इट हैज हाउ मच 250 ml तो बहुत चीप है ये मुझे तो सही लग रहा है काफी सही रेट है इनका. एंड दिस इज आर्गेनाइल हेयर शैम्पू एंड दिस फॉर ड्राई फ्रिजी हेयर जो मेरे हैं रिड्यूस फ्रिज रिड्यूस स्प्लिट एंड्स नरिश ड्राई हेयर्स. मैंने बाल कटवा लिए बिकॉज ऑफ स्प्लिट एंड्स तो ये मेरे लिए तो बहुत ही काम की चीज होने वाली है आई नो फॉर श्योर. तो मैं ज़रूर ये शैम्पू कंडीशनर अप्लाई करके ज़रूर अपडेट करूँगी एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस. अब बहुत से जो ब्लॉगर्स हैं they literally take a shower and they showcase how the shampoo perform and yeah अभी मेरे पास इतना फिल्मिंग सेटअप भी नहीं है and maybe if I have 1 lakh subscriber तो मैं ऐसा करने का सोच सकती हूँ. Next is this CC cream और yeah this is the vitamin C CC cream और इनके मेकअप में भी स्किन केयर इन्फ्यूज्ड है. Obsessed, this is so cute. I know this is not practical. बहुत से लोगों ने बोला इससे प्रोडक्ट डिस्पर्स नहीं होता है but this is so adorable ना यार. This packaging is so cute and yeah this is amazing. This is a shade peach जो मेरे ऊपर बहुत सही लग रहा है. न्यूट्रल अंडरटोन है इसका. It blends like dream and yeah ऐसा लगता है मेरी स्किन है and you can अब बता भी नहीं पाओगे कहाँ का ये बीबी क्रीम और ये सीसी क्रीम है. तो इतना अच्छा है स्किन में डिसॉल्व हो जाता है बिल्कुल भी मेकअप ही नहीं लगता. आई विल हाईली रिकमेंड यू. और अभी मैं एक फुल फेस फर्स्ट इंप्रेशन करूंगी तो उसमें भी मैं इसको लगा के जरूर दिखाऊंगी बिकॉज दिस इज सो गुड. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो एक्सपेंसिव तो होगा ही. दिस रीच फॉर 650 रुपीज 649 टू बी प्रिसाइज. तो ये हाइड्रा ग्लो सीसी क्रीम है and this is the shade peach and the only con is इसमें ज़्यादा shade नहीं है तो बट सीसी क्रीम में चल जाएगा. बट मैं कहूँगी देन दे नीड टू इंक्रीज द शेड रेंज. बिल्कुल बहुत ज़रूरत है इनको. ओके ओके सो नेक्स्ट है ये मार्स का नया फाउंडेशन लॉन्च हुआ है. आई वाज लाइक सो मच इन डिलेमा कि मुझे ये फाउंडेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए बिकॉज दिस इज हाई कवरेज और हाई कवरेज मेकअप मैं नहीं लगाती. मैं एकदम स्किन लाइक मेकअप लगाती हूँ तो बट आई वॉन्टेड टू बाई इट एंड क्योंकि ये मार्स है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेजिंग ना आई विल से दिस इज सो थॉटफुल यू गाइज. You can see a lady with burqa, you can see a lady जो modern top पहने हैं, someone with a sari, तो someone with age, someone with that scarf जो सर पे कैरी करते हैं. मुझे नहीं पता ये डिफरेंट रिलीजन होता है बट यू कैन सी इस पैकेजिंग का एक मीनिंग है एंड मास्क की पैकेजिंग हमेशा मुझे बहुत लग्जरियस लगती है एंड मुझे ये रखना है for the cause they are trying to show in the packaging itself. So yeah, the now coming about the product मैंने अभी तक यूज नहीं किया है. This is a frosted bottle with a pump packaging and this is high coverage prepared especially for Indian skin type and
दिस इज थिक यू गाइस, थिक फॉर्मूला है क्योंकि फुल कवरेज है, ब्लेंड्स एफर्टलेसली, बहुत ज्यादा कवरेज है, बहुत ज्यादा, यू कैन सी कितना कवरेज है, बहुत ज्यादा कवरेज है क्योंकि ये एकदम फुल हाई कवरेज फाउंडेशन है। एंड आई विल रिकमेंड यू इफ यू वांट समथिंग फॉर शादी एंड ऑल तो कर सकते हो ट्राई। एंड मैं इसको ऑफ कोर्स फुल फेस फर्स्ट इंप्रेशन के लिए, कितनी सारी फाउंडेशन है यू कैन सी, बट या मैं धीरे धीरे करके अपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में ट्राई करके बताऊंगी, क्योंकि मैं ना ऐसा नहीं कि बस स्वॉच कर दिया, मैं उसको दिन भर कैरी करके रात में आई आई ऑलवेज अपडेट यू गाइस कि हाँ सुबह 12 बजे मेकअप ऐसा था, रात को 7 बजे मेकअप ऐसा है, तो वो मैं करती हूँ, इसलिए एक बार में एक फाउंडेशन ही मैं टेस्ट आउट करके बता पाऊंगी, बट डेफिनेटली मैं टेस्ट करके बताऊंगी इसको। ओके सो ये भी थोड़ा दिन हो गए हैं इसको लॉन्च हुए, दिस इज स्मार्ट हाई टॉप मस्कारा, सो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। एंड दिस लुक लक्स, लाइक दिस लुक लक्जरी बाय द पैकेजिंग, और ये मैक की पैकेजिंग का ड्यूप लग रहा है, मुझे तो लग रहा है मैक का हाई डायमेंशन समथिंग ऐसा आता है। अब मस्कारा ना थोड़ा सा एक आध महीने बाद अच्छा परफॉर्म करता है, बट डेफिनेटली दिस हैज दिस आवर ग्लास एप्लीकेटर। Okay, you guys. So yeah, this is the wand. Is the wand. I don't know how much camera is focusing. Yeah, it is. So ये ना, I think product focus mode off था, something like that. So yeah, this is a must buy, especially for the packaging. Hourglass bottle है that you know better than Sex mascara. Too Faced better than Sex mascara. वैसा ही wand है इसका. So you can try this and जब भी मुझे नाम लेना पड़ता है, I'm like क्यों ऐसा नाम रखते हैं ये हाई एंड ब्रांड्स, आई डोंट गेट इट, आई डोंट नो। So yeah, so now let's talk about some things, और ये सब Amazon से ही है। Starting I showed you Mamaearth, वो Mamaearth की वेबसाइट से, बाकी सब Amazon से है, so it's basically a Amazon haul। तो inside Pro range तो launch हुई है, but inside में भी कई नए launches हुए हैं। So this मैंने इसको फाड़ दिया था पैकेजिंग, I just wanted to show you this is the packaging, and this is the eyeliner, and this is a brown sketch eyeliner. So I'm going to swatch this. This is a very deep brown, and this is a stunner. So बहुत पिगमेंट है इसमें। यूजुअली क्या होता है स्केच आईलाइनर्स में इतनी पिगमेंट नहीं होती, पर इसमें भर भर के पिगमेंट है। एंड या वी विल लेट इट सिट फॉर 2-3 मिनट्स, उसके बाद इसको रिमूव करके देखते हैं कि ये कुछ स्मज प्रूफ है क्या। नेक्स्ट इज दिस मिस क्लियर का न्यूड लिप लाइनर, दिस इज शेड न्यूड वाइन, और ये थोड़ा डीप न्यूड है, सो इफ यू आर फ्रॉम अ डार्कर कॉम्प्लेक्शन ना you can go for this. This is the shade nude wine, and this is amazing. इसको as a काजल भी use कर सकते हैं, एक wine काजल की तरह। Guys, the next product is this one. This is the inside का new lip liner, इनके और भी lip liner हैं, but this is a new, and this is the shade low key. So yeah, this is supremely creamy. So I don't know as a lip liner कितना work करेगा, but it's a very pretty nude. This is a pink nude, proper pink brown nude है, and it is like my lips but better. So I love it. तो देखना पड़ेगा as a lip liner ये work करता है कि नहीं. Okay. But as a lipstick, I know ये बहुत प्यारा shade है, and this video is for 60-70 rupees. Totally worth it. Okay, next is another shade of this Chubbs lipstick. ये इतना ज़्यादा मैं इससे obsessed हूँ ना. This I want to buy all the nudes from this collection. So this is for 100 something rupees. This is the shade Irish Mocha. And yeah, ये MAC की कोई lipstick का dupe है, but I will say on its own also it is amazing. This is the shade. It's a proper brown nude, इसमें ज़्यादा undertone नहीं है, it is a straight up brown, it's a warm brown we can say, and this looks stunning, बहुत सुंदर shade है, बहुत प्यारा formula है। If you have dry chips lips, try. If you have dry chapped lips like me, you will really, really, really enjoy this. And yeah, I will highly recommend you this formula, this shade. Everything about this is perfection. The packaging looks, and this is for 100 something rupees, totally worth it. And so मैंने सब remove कर दिया, just eyeliner है, because we are going to obviously do the wear test and all। कैसा है थोड़ा सा देखते हैं, एक दो मेरे पास सच प्रूफ है क्या। The next is the single eyeshadow. Now मैं ऐसा loose shadows की भी fan नहीं हूँ, but I saw Arnakshi's video और she was swatching this and immediately got my attention. This is by uh, Preview. This is the brand Preview, and the shade is Midnight Violet. So this is by Preview.
ये आई थिंक एक इंस्टाग्राम ब्रांड थी एंड विच इज़ ऑन अमेजोन, तो अमेजोन हॉल है ये। एंड मैं इंस्टाग्राम स्टोर से अभी तो शॉपिंग नहीं करती हूँ, देखते हैं लेटर ऑन इफ आई will do that I will let you guys know। एंड ये बहुत सिक्योर है तो मैं इसको ओपन करके आती हूँ। सो या यू कैन सी डायरेक्ट डिब्बे में पाउडर है, यू नो दिस इज द लूज शैडो। और लूज शैडो मुझे ना वैसे पसंद नहीं, बट आई बॉट दिस बिकॉज इट हैज duochromes एंड दिस हैज स्लाइट शिमर, यू नो बहुत प्यारा, इसका अलग ही एक यूनिक फॉर्मूला है। एंड ये इस तरह की जो इंडी ब्रांड्स हैं वो यूनिक थिंग्स लाती ही हैं। एंड दिस इज अ स्वॉच एंड या दिस इज अ स्टूडियो लाइट स्वॉच एंड डेफिनेटली ये ज़्यादा चमकेगा इन नेचुरल डे लाइट। और यू नो बादल बहुत हैं आज, नेचुरल डे लाइट है नहीं, तो स्टे ट्यून। मैं जब फुल फेस फर्स्ट इंप्रेशन करूंगी ना, डेफिनेटली सनलाइट में ये कैसा दिखता है, अभी बिल्कुल बादल हैं वो गाइस, नहीं समझ में आएगा, अदरवाइज मैं दिखा देती आज ही। दिस इज अमेजिंग, एक बहुत प्यारा इसका एक ईयर डिसेंट जो इथीरियल शेडोज होती हैं ना वैसी हैं ये। इट्स अ वेरी इथीरियल formula and if you guys are purple lover you will like this shade। This has gray, this has blue, this has purple, so definitely it is very pretty to look at और ये नाइट में अच्छा लगेगा आई नो। सो या डेफिनेटली विल डू अ फुल फेस फर्स्ट इंप्रेशन, तब बताऊंगी मुझे ये कैसा लगा। सो यू गाइज दिस इज रियली स्मच प्रूफ। मैं इसे रगड़ रगड़ के स्मच करने की कोशिश कर रही हूँ ना, दिस सुप्रीमली लॉन्ग लास्टिंग, वाओ आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। ओके यू गाइज, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहे हैं। आई होप मैंने सब कवर कर दिया हो, नहीं तो नेक्स्ट हॉल में मैं उसे इंक्लूड कर दूंगी। बट आई मस्ट से आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड बाय दिस होल यू नो हॉल, this whole the bunch of stuff that I bought, you know, but full face first impression जरूर आ रहा है, stay tuned for it। and yeah, if you like watching haul videos और मैं बहुत सारी try on hauls भी करती हूँ, and so stay tuned for more such videos। I hope you like this video। if you found this video helpful, do like, share, subscribe, comment down below what other kinds of video you want me to do and कौन सा product मैं पहले रिव्यू करूँ वो भी कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई रिक्वेस्ट है कुछ और ट्राई करने की, you guys can let me know। and yeah, that's pretty much it for this video। I hope you like this video। if you do, please like, share, subscribe, and I shall see you in my next one। Bye।